Ma'am, I have a doubt in the meaning. Ma'am, I Yes. also. Yes. Ask. Have you any doubt? Ask to Yes. me. Yes. And can I take the page? Yes. Take page and pen. Ask. Okay. Ajeevan, what is the meaning? Jeevan, lifelong. Okay. Ma'am. Lifelong. Any other doubt? No. Yes, ma'am. Hmm. And the Ask. second paragraph. Read that. The third. Read the Yes, ma'am. sentence. Good evening, And ma'am. the word harmy. Harmy. Hami Bardi. Agree. Hami Bardi meaning So Bardi agreed. means Bardi. Not Barna. Hami Bardi means agreed. 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 Okay. What's the meaning of Janta? Alvina? Of Janta. Janta, no. Janta. No. No, continue. Excuse me, ma'am. Yes. In that Some- chipa. So for that, can we say? Hidden. No, ma'am. For that, can we say chipao? That Chipa? also chipane. Chipana, that word, according the Meaning will answer. also be same. No. Okay. According to the How sentence. about the meaning of Janta? Chipna. It depends on the Chipna means- sentence. Siddhi, What is the meaning of Janta? Siddhi, please mute. Okay. If they have any doubt, no, I will What clear. is the meaning of Janta? Janta meaning no. Okay. If I am explain, no other in between, they will explain. Nothing they didn't get. Okay now? Yeah, once more I will read. आज मोहन का जन्मदिन है। दादाजी ने मोहन से वायदा किया था कि उसके जन्मदिन पर उसे वो ऐसा उपहार देंगे जिसे वह आजीवन याद रखेगा। मगर यह तोहफा लेने के लिए मोहन को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। सुबह इतनी जल्दी। Ma'am, Yes. ma'am, I go to National Sun. Can you send the notes to me? Notes? So Huh? I didn't send any notes nowadays. Okay, ma'am. सुबह इतनी जल्दी उड़ने की बात। सुबह इतनी जल्दी उड़ने की बात मीनिंग थी। मोहन की समझ में My yes. mother's phone is broken. That's why I cannot use WhatsApp. That notes I cannot write. Ma'am, he's I talking didn't about, send any notes now. ma'am, he's talking about Mahan Bharat. Mahan Bharat. Yes, ma'am. That notes. Okay, that notes. How you will get? Can you send in my WhatsApp? You send one message to me, then I will clear. Yes, ma'am. सुबह इतनी जल्दी उठने की बात मोहन की समझ में नहीं आई, वो भी इतवार को। इतवार मीनिंग संडे। मगर मोहन जानता था कि दादाजी की हर बात के पीछे कुछ गहरा अर्थ छिपा होता है, इसलिए उसने हामी भर दी। यस, नेक्स्ट देखो। मोहन रात भर मीनिंग फुल, full day, full night. रात भर meaning full night. भर meaning full. रात भर meaning full. रात भर, that is full day. उस अनोखे उपहार के लिए, उस meaning that. अनोखे उपहार, अनोखा उपहार. We learned last class, that is the heading. Heading. Unique. Ma'am, page number. Unique gift. Anokha ubahar. Anokha ubahar meaning unique gift. Okay. उपहार के लिए अटकले लगाता है। अटकला meaning, अटकले meaning गसी।
1 second. Page number. Wait. 1 second. Okay. Adkale meaning अर्थ क्या है? अटकले लगाता रहा. अटकले meaning guessing. अटकले meaning guessing. अटकले लगाता meaning think. रहा क्या सोचा? जिसके लिए meaning for that. जिसके लिए उसे सुबह जल्दी उठना था, इसके बारे में सोचता है. मोहन, See the board. Hear it one more time. you rejoin that. That is your problem. Okay, next one. Read that sentence once more. मोहन रात भर उस अनोखे उपहार के लिए अटकलें लगता रहा, जिसके लिए उसे सुबह जल्दी उठना था. Clear now? अटकले meaning guess और सोचना और think. लगता meaning think. Okay. Listen, I will explain. Listen. रात भर मोहन ये अनोखा उपहार के बारे में सोचने लगा. Clear now? रात भर मोहन ये अनोखा उपहार के बारे में सोचना लगा. He can't sleep. He is thinking, oh, tomorrow morning 4 बजे उठना पड़ेगा. 4 बजे मेरे लिए अब क्या मिलेंगे, उपहार के रूप में क्या मिलेंगे, इस बारे में सोचता है. रात भर. Once more I will read that sentence. मोहन रात भर उस अनोखे उपहार के लिए अटकले लगाता रहा, जिसके लिए उसे सुबह जल्दी उठना था. Yes. Next one क्या है? सारी रात meaning रात भर, a full night. सारी रात उत्सुकता के कारण. उत्सुकता meaning curiosity. उत्सुकता meaning curiosity. उत्सुकता meaning curiosity. Ma'am, curiosity means? Anxiety. Okay, ma'am. Did you know? Did you study? Yeah, ma'am. I'm not curious. Only I studied anxiety. Anxiety and curiosity, anxiety. Okay. उत्सुकता के कारण. One more time. How to pronounce that word? उत्सुकता. Okay, ma'am. उत्सुकता के कारण meaning reason. करवटें बदलते रहना meaning change one side to another side. See that picture. Mohan is sleeping, not straight. Me, ma'am. Lying one side. Okay. Yes. Excuse me, ma'am. Yes, one. Ma'am, what is the meaning of Karan Karvate? Karan meaning reason. Karan meaning karanam, reason. Ma'am, meaning of Karvate. That I am saying, Manjima, I didn't explain. I am reading. Yes. उत्सुकता के कारण. करवटें बदलते रहने से meaning changing one side to another side. What is the reason that he can't sleep properly? He is thinking about अनोखा उपहार के बारे में सोचता है, इसलिए he can't sleep
So what he change one side to another side. Clear now? Clear now? Huh? Full night he can't sleep properly. उत्सुकता के कारण अनोखा उपहार के बारे में सोचता है, इसलिए he can't sleep. Okay. उत्सुकता के कारण करवटें बदलते रहने से, करवटें बदलते changing side, one side to another side. Okay. सुबह मोहन की आंख, आंख meaning eyes. नई गुली, गुली meaning खुलना, open. नई गुली, गुली meaning open. As third paragraph, once more I will read. मोहन रात भर उस अनोखे उपहार के लिए अटकलें लगता है. अटकलें you can use सोचता है. Ma'am, what is Easy word. सोचता है meaning easy, सोचता है. Okay. Yes. जिसके लिए अनोखे उपहार के लिए उसे सुबह जल्दी उड़ना था. He won't get up morning 4 o'clock. सारी रात उत्सुकता के कारण करवटें बदलते रहने से सुबह मोहन की आंख ही नहीं खुली. Clear now? Yes, Aditi, what is your turn? Ma'am, what is the meaning of lagata? लगता meaning think, think. लगता है. He सोचता है. You read that word. सोचता है. Okay. Next one. Once more I will read third paragraph. मोहन रात भर उस अनोखे उपहार के लिए अटकलें लगाता रहा, जिसके लिए उसे सुबह जल्दी उड़ना था. सारी रात उत्सुकता के कारण करवटें बदलते रहने से सुबह मोहन की आंख ही नहीं खुली. Last night he can't sleep properly. That's why he can't wake up 4 o'clock. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what is the meaning of badalte? Badalna meaning change. Instead, badalte. Change. Ma'am, what Sapna. is the meaning? Ma'am, Yes. what's the meaning of fifth word in the third paragraph? You don't say that. You read that word, Molan. Try to read. Read Sapna. We'll get. And Utsugada. Anoko? Utsugada. No, ma'am. He's telling Anokha. अनोखे उपहार के लिए अटकलें. unique gift? अटकलें सपना. What is the No, ma'am. Mohan Rak Ah. was after that. अनोखे उपहार? That is the heading. Unique. Gift. Yeah, Heading. ma'am, she was talking about Anokha. Anokha meaning unique. Okay. Ma'am, you are not taking summary. You said in the That I will. Now first I will complete this one. Okay. Next one. Anokha. Anokha ubahar. Next one. Next paragraph देखो. Abhi. Abhi meaning now. Ma'am, Yes, Shreya. ma'am, can you say the meaning of coolie? Guli. 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 Open. Guli. Guli meaning open. Okay. Abhi. Abhi meaning now. वह गहरे सपने में डूबा ही. He can't sleep properly. इसलिए morning itself वह गहरे सपने में. गहरा सपने meaning deep dream. गहरा meaning deep. सपना meaning dream. सपने में. डूबा. डूबा meaning sink. Sink. मुंगी पोगा. डूबा. डूबा हिदा. डूबा. डूबना. डूबना. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. What is the meaning of gahre sapne? Deep dream. Deep dream.
Okay, ma'am. Thank you. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you see the Text it is actually- written Duba. Dubna. Ma'am, Ah. can you see Text the it is That is the na. When we are using in the sentence, we can't. You no need to use na pratyay. Correct word is dubna. Okay. Yes. Correct. Now, right? अभी वह गहरे सपने में डूबा ही था. ओके. क्या हुआ? मॉम ने प्यार से उसे जगाता हुए, जगाता मीनिंग ट्राई टू वेक अप, जगाते हुए मीनिंग ट्राई टू वेक अप, जगाते हुए. मॉम ने प्यार से उसे जगाते मीनिंग ट्राई टू वेक अप. ओके. And after that मॉम ने क्या कहा? जन्मदिन की दुआएं मीनिंग ब्लेसिंग, दुआएं blessing, दुआएं मीनिंग ब्लेसिंग. जन्मदिन की दुआएं दीम अर्थ क्या है? दीम देना मीनिंग, दीम मीनिंग देना, गिव. देना पास्ट टेंस दीम, गिव. और याद दिलाया अर्थ क्या है? याद दिलाया रिमाइंड, remember याद दिलाया, याद रिमाइंडर. Ma'am, we can also write as remembered, right? No. याद दिला reminded for me picture. Reminded means Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Remember mean ओर्कुगा. Okay. Ma'am, याद दिलाया कि ma'am, yad is also remember. याद रखो. Yes. Remember. But what is the meaning here? याद दिलाया. Reminded. Yeah. याद दिलाया क्या है? कि because अनोखा उपहार a unique gift देने के लिए meaning giving, for giving. देने के लिए meaning for giving. दादाजी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं meaning waiting. देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे मीनिंग वेटिंग. मीन्स दादाजी आया उपहार देने के लिए. 4 बजे दादाजी आया. ओके. प्रतीक्षा कर रहे हैं. 4th पैराग्राफ once more I will read. अभी मीनिंग नाउ. वह गहरे सपने में डूबा ही था कि मॉम ने प्यार से उसे जगाते हुए. He can't wake up alone. Okay, self. Why? रात he can't sleep properly. इसलिए 4 बजे he can't wake up. मॉम ने उसे प्यार से जगाते हुए try to wake up. जन्मदिन की दुआएं दी. मैम दुआएं मीनिंग ब्लेसिंग also give. और याद दिलाया reminded. by अनोखा उपहार देने के लिए दादाजी उसकी प्रतीक्षा कर रही है. दादाजी waiting there. अनोखा उपहार देने के लिए दादाजी 4 बजे आया कि दादाजी मोहन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं. नेक्स्ट वन. मोहन ने आंखें मलते हुए meaning rubbing eyes. आंखें
मलते आंखें मलते हुए rubbing eyes. आंखें मलते हुए मैंने रबिंग आइज मलते हुए घड़ी देखी घड़ी अर्थ क्या है घड़ी Clock. क्लॉक क्लॉक घड़ी मीनिंग क्लॉक देखी या सुबह के ठीक 4 बजे ओके 4 o'clock करेक्ट 4 o'clock यस He woke up correct at 4 o'clock. सुबह ठीक 4 बजे ठीक ठीक मीनिंग ठीक मीनिंग There is only 5 more minutes. What is the meaning of tea? ओके आई नो What is the meaning Summary. Okay, ठीक 4 बजे correct 4 o'clock. I will complete this one after that. And It's only 5 minutes. summary. Summary. Which chapter? Ma'am, Mahan Bharat. Mahan Bharat. Mahan Bharat chapter. Okay, yes. Some students did. Some did And already you did told this deal do. today. Yes. Okay. No, that don't worry. That we can conduct. Yes. Next No, one. it was Mahan Bharat. Yeah. Mohan, ठीक 4 बजे. Next क्या है? You complete that sentence. Next. Mohan कूद कर meaning कूदना. Jump. कूदना jump. बिस्तर से बिस्तर meaning bed. Come from the बिस्तर से भागा meaning ran. He ran from the bed. It's okay. और जाकर he going दादाजी के चरण स्पर्श किया. चरण meaning touch the feet. चरण स्पर्श किए meaning touch the feet. अनुग्रह लेने की. अनुग्रह लेने. Oh yes, very good. चरण स्पर्श किए meaning touch the feet. We will do know that. Indian culture. Okay. കാല് തൊട്ട് വന്നിക്കുക. It's not for चरण स्पर्श किए. Okay. Blessing के लिए. आशीर्वाद के लिए. Yes. दादाजी ने उसे गले से लगाकर गला लगाकर meaning hugged. गले लगाकर meaning hugged. गले लगाकर meaning hugged. What is the meaning of गले लगाकर? Hugged. Hug. गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी. बधाई meaning wishes. बधाई दी. और चिरायु होने. चिरायु meaning long life. आयुष्मान भव. बधाई meaning wish. जन्मदिन की बधाई no Rimadinada, you know that is the meaning. जन्मदिन I know. You read that before word and after word also you read. You will get a meaning. Okay. जन्मदिन की बधाई दी meaning gave. दी meaning gave. Next one. और चिरायु होने का. चिरायु होना meaning long life. चिरायु होना meaning long life. Long life का hospital. चिरायु होने का आशीर्वाद दिया. आशीर्वाद दिया meaning आशीर्वाद किया. Blessing. Excuse me, ma'am. Yes. What is the meaning of जन्मदिन की बधाई? Birthday wishes. चिरायु meaning long life. आयुष्मान भवा. दीर्घायुष भवा. Okay.
Ma'am, now no time for the Ah, so okay, summary. no problem. Okay, no problem. And I didn't take attendance. I will mark attendance. For last paragraph, once more you read. अभी वह गहरे सपने में डूबा ही था कि माम ने प्यार से उसे जगाते हुए जन्मदिन की दुआएं दी और याद दिलाया कि अनोखा उपहार देने के लिए दादाजी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोहन ने आंखें मलते हुए घड़ी देखी। सुबह के ठीक 4 बजे है। मोहन कूदकर बिस्तर से भागा और जाकर दादाजी के चरण स्पर्श किए। दादाजी ने उसे गले से लगाकर जन्मदिन की बधाई दी और चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। Ma'am, can you say the meaning of chira? चिरायु मोले long life. चिरायु long life. Ma'am, time is up. I know. Ma'am, I finish reading. I finish reading. Yes. Ma'am, I finish reading. Have you any doubts? No, next class I will clear. Okay. Up page number 50 full you read beginning. Yeah? That page full you read. Have you any doubts? You mark it that next class I will clear. Okay. Thank you, ma'am. So, listen here. One page finish now. So no need to use study summary Mahan Bharat. Now you start summary this chapter. Okay, now. Ma'am, so we are starting this chapter summary from the first page. Page From beginning number 50. onwards, everyone has Yes. to say. Page number 50, full summary you should learn. Ma'am, that is easy I could do. Okay. Ma'am, that is We easy. need to tell the summary in the next class. Yes. Page number 50, summary. Ma'am, only 50? Only 50. The only 50 finish now. Yeah. Ma'am, I first write done and that is like that. Yes. About page number 50, summary learn. Next class should say. Okay now? Thank you, ma'am. Okay, say bye. Bye. Thank you, ma'am.